गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे आमे टाइप ऑफ इकोसिस्टम को केमिति भाग करथिले जे नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, टेम्पररी इकोसिस्टम और परमानेंट इकोसिस्टम एई प्रकार आमे भाग करथिले। आज आमे ऑन द बेसिस ऑफ तार जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ताको आमे भाग करिबा। ठीक अछि। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हिसाब रे आमे जानिथिले जे दी प्रकार अछि, गोटे अछि टेरेस्ट्रियल आ गोटे एक्वाटिक। तो ये टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक विषय आज आम पढ़ा। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थिले निश्चय लाइक करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो एवं ताको शेयर मध्य करिवो। ठीक अछि। तो देखिबा आज आम देख द एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ all the living and non-living things in a specific natural setting। तो बेसिकली आम जानिथिलु जे इकोसिस्टम टा बेसिकली दीटा कंपोनेंट को तैयारी, गोटे होची लिविंग थिंग आ गोटे होची नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग रे को माने आसबे एई जगह देखो अछि जोडा होची हमर देखो रॉक, सॉइल, वाटर, सनलाइट। ठीक अछि। एगुडा होची हमर नॉन लिविंग थिंग। सेमति हम लिविंग थिंग रे कोन जानिबा प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यही प्रकार एमान को लिविंग थिंग बोली कहा जिवो। तो यही प्रकार दीटा कंपोनेंट रे तैयारी। ठीक अछि। तो ऑल द तब देखो ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम फॉल इनटू वन और टू कैटेगरी, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कोन? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर लैंड बेस्ड व्हाइल एक्वाटिक आर वाटर बेस। अर्थात टेरेस्ट्रियल माने कोन जोटा कि हम स्थल भाग रे थिबा जो इकोसिस्टम अछि जो जगह रे कि लिविंग थिंग आ नॉन लिविंग थिंग थांती ताको कहते टेरेस्ट्रियल। किंतु जोटा हम पानी जगह रे थिबो व वाटर बेस रे थिबो ताको हम एक्वाटिक इकोसिस्टम बोली कहबा। ठीक अछि। तापर देखो द वर्ड बायोम आमे पूर्वरु जानिथिले बायोम माने कोन टोटल वर्ल्ड को आमे बायोम बोली कहू मे आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब terrestrial ecosystem while extend across a large geographical area such as tundra। ठीक अछि। तापर हमें देखिबा ताला आज कोन फास्ट होछ हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कोन देखिबा। तो देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कोन द इकोसिस्टम व्हिच इज फाउंड ओनली इन लैंड फॉर्म is known as terrestrial ecosystem। The main factor which differentiates the terrestrial ecosystem from the aquatic ecosystem is the relative shortage of water in the terrestrial ecosystem। अर्थात गोटे terrestrial ecosystem आ गोटे aquatic ecosystem भितर कौन डिफरेंस? केवल पानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे पानी न थाए एवं एक्वाटिक इकोसिस्टम रे कोन पानी थाए। एटा ही होची तार डिफरेंस। एंड as a result of important that water attain in these ecosystem due to its limited available। अर्थात वाटर टा कोन अल्प मात्रा रे अछि माने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे कोन एक्वाटिक इकोसिस्टम रे टोटल वाटर रे ही समान को हैबिटेट थाए। किंतु टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कोन सेथरे वाटर टा अल्प मात्रा रे थाए जोटा कि समान कर केवल जेति कि तांको दरकार पीबा पई जेति कि दरकार सेही अनुसार अल्प मात्रा रे थाए, बाकी सब होची लैंड फॉर्म रे थाए। ठीक अछि। Another factor is the better available of light in these ecosystem as the environment is a lot cleaner inland than in the वाटर। अर्थात आउ गोटे हम जब डिफरेंस देखा तो बेसिकली सनलाइट जो अच्छी से लैंड फॉर्म रे अधिक मात्रा रे सनलाइट अवेलेबल थाए किंतु वाटर फॉर्म रे कोन बेसी सनलाइट पड़े ना। ठीक अच्छे। जदि जदि पानीटा बेसी गभीर थिबो ताले गभीर आउ जदि पानीटा जदि क्लीन नथिबो ताले सनलाइट केबे भी गभीर पर्यंत पानी रे पहुंची पारे नाही। तो एटा होची तार डिफरेंस। देखो द मेन टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड द माउंटेन इकोसिस्टम। ताले आमे चारि प्रकार विषय पढ़िबा। गोटे होची कोन फॉरेस्ट इकोसिस्टम कोन, डिजर्ट इकोसिस्टम कोन, ग्रासलैंड कोन एवं माउंटेन कोन। तापर देखिबा ताले फास्ट आमे आज कोन देखिबा फॉरेस्ट इकोसिस्टम विषय देखिबा। तो देखो these ecosystem have an abundance of flora और प्लांट्स। तो फ्लोरा माने कौन प्लांट्स। तो बेसिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम रे प्रचुर मात्रा रे प्लांट्स थाए। ठीक अछि। एंड हेंस इन दिस इकोसिस्टम
ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन ए स्मॉल स्पेस जेहेतु अधिक आम जानी आमर प्रोड्यूसर किए प्लांट्स तो प्रोड्यूसर जदि अधिक मात्रा अच्छी प्लांट जदि आमर हो प्रोड्यूसर ठीक अच्छे एवं प्रोड्यूसर जदि अधिक मात्रा अच्छी ऑटोमेटिक आमर कंज्यूमर भी अधिक मात्रा थे एवं डिकम्पोजर भी से अनुसार अधिक मात्रा थे तो जेहेतु फॉरेस्ट रे प्लांट्स अधिक अच्छी एठारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्प जगार अधिक थाए दिस मीन दैट दीज इकोसिस्टम हैव ए हाई डेंसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज इकोसिस्टम आर classified according to their climate type as tropical, temperate or boreal. That is tropical होची evergreen forest, tropical होची deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous forest and taiga. तो एई प्रकार हमर फॉरेस्ट को मध्य कौन है भाग कराई ठीक अच्छे तो तार क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकिन यही प्रकार भाग कराई तो आम जियोग्राफी रे ऑलरेडी आम क्या टाइगा कहबा क्या आम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहबा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहबा डेसिडियो फॉरेस्ट क्या कहुए ए विषय ऑलरेडी तुम जियोग्राफी रे क्लास 9 10th रे पढ़ीच ठीक अच्छे तापर देख in the tropical rainforest ecosystem contain more diverse flora and fauna. Flora माने कौन plants, fauna माने होची कौन organism. Then ecosystem in any other region on earth. तो बेसिकली जदि तुमको क्वेश्चन आसीबो को जगह रे बेसी मात्रा रे फ्लोरा और फोना देखा जाए तो बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोटा अच्छी सेटार अधिक मात्रा रे कौन हुए फ्लोरा आउ फोना देखा जाए कहीं जदि अधिक मात्रा वर्षा भी होची आउ जदि सेठी अधिक प्लांट्स अच्छी ऑटोमेटिक से विभिन्न प्रकार गछ देखा जिवो एवं विभिन्न प्रकार गछ देखा माने अधिक मात्रा रे सेटार मध्ये ऑर्गेनिज्म माने मध्ये रही परिबे ठीक अछि इन दीज वार्म moisture laden environment tree grow tall and foliage in loose and dense with species inhabiting the forest floor all the way up to the canopy in temperate zone forest ecosystem may be deciduous coniferous or oftentimes a mixture of both in which some trees shed their leaves each fall which other remain evergreen year around तो बेसिकली जो मान मिक्सचर ऑफ डेसिडियस भी था बा कनिफेरस होता बा ऑफ्टर टाइम यही टाइप जो मिक्सचर होना जो एनवायरनमेंटा रहा ताल सेठारे कौन हुए बेसिकली किछि समय पर्यंत हरा भरा गछ बा एवरग्रीन फॉरेस्ट मध्य देखा जिवो आउ किछि समय पाई सेठारे मध्य कौन हुए पत्र झड़ा मध्य होता है बा लिवर फॉल होता है तेणु एई प्रकार मिक्सचर मध्य सेठी देखा जाए किंतु ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रे सब बेले एवरग्रीन थाए ठीक अच्छे तापर देख इन द फार नॉर्थ जस्ट साउथ ऑफ द आर्टिक बोरियल फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज टाइगा है आउ को जगह आर्टिक जो अच्छी आर्टिक जोटा साउथ रो जस्ट आर्टिक जो जस्ट नॉर्थ अच्छी नॉर्थ रो जोटा आर्टिक रीजन अच्छी से जगह कौन बोरियल फॉरेस्ट देखा जाए जहाँ को आम टाइगा मध्य कही था एवं से टाइगार कौन अच्छी से कनिफेरस ट्रीज देखा जाए ठीक अच्छे तो बेसिकली एटा होची हमर फॉरेस्ट इकोसिस्टम गला तापर आमे देखिबा ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कोन देखो द ग्रासलैंड आर द एरिया व्हिच कंप्राइज मेनली ऑफ द ग्रासेस तो बेसिकली जो जगह ग्रास को लेकिन से इकोसिस्टम तैयारी ताको आमे ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहबा विथ ए लिटिल नंबर ऑफ श्रब एंड ट्रीज तो सेठी बेसिकली ग्रास बेसी थाए एवं कम मात्रा रे सेठी श्रब किंबा ट्रीज थिबो ग्राजिंग एनिमल जेहेतु ग्रास अछि ता माने कोन सेठी ग्राजिंग एनिमल थिबो अर्थात जो माने घास ऊपर निजर खाद्य पय निर्भर करती सेही प्रकार एनिमल्स ही रहिबे ठीक अछि तापर देखो इंसेक्टिवोर्स हर्बिवोर्स आर द मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which found in these region the three major type of grassland are देखो prairies साभाना एवं स्टेप्स तो बेसिकली यही ग्रासलैंड जो ग्रासलैंड को मतलब तीन भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ प्रेरीज गोटे हूँ कौन साभाना आ गोटे हूँ स्टेप्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम तापर देखियो ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर टिपिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन although they can exist in
colder area as well as as is the case with the well known Siberian steppes। तो बेसिकली एमाने को प्रकार एरिया रे देखा जाती बेसिकली मैंने ट्रॉपिकल एरिया हो बा टेम्परेट एरिया हो से जगार एमाने देखा जाती अर्थात ठंडा जगार टिके बेसी एमानकर देखा जाए आउ मध्य एमाने साइबेरियन स्टेपेस मध्य देखा जाती ठीक अच्छे। तब देखो ग्रासलैंड जो ग्रासलैंड अच्छी से आर द कॉमन क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमी aridity. Trees are sparse or non-existent, but flower may be interspersed with the grass. Grassland provide an ideal environment for grazing animals। तो बेसिकली ग्राजिंग एनिमल्स माने एई प्रकार एरिया रे बसबास करंती। सावाना आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड which are dry seasonally and have a large number of predator and grazers। तो बेसिकली जो साभाना एरिया अच्छी एटा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रे देखा जाए जोटा होची कोन टिके ड्राई एरिया थाए ठीक अछि इन कंपेयर टू द हमर जोटा में पढ़िले जोटा टेम्परेट एरिया जो अछि ताठु ये कोन अछि टिके ड्राई थाए ठीक अछि हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रिडेटर ऑफ ग्राजर सेठारे बहुत मात्रा रे शिकारी भी थांती एवं जो माने घास चरंती से माने मध्ये रुहंती ठीक अछि। Prairies are the temperate grassland which are totally devoid of large shrub and tree। तो बेसिकली जो प्रेरीज अच्छे माने टेम्परेट ग्रासलैंड रे ए प्रकार प्रेरीज टाइप रो ग्रासलैंड देखा जाए। प्रेरीज आर द थ्री टाइप्स जोटा होचे हमर कोन मिक्स्ड ग्रास टॉल ग्रास आ गोटे जे शॉर्ट ग्रास। तो एई प्रकार ग्रास मान को नहीं कि ना प्रेरीज तैयारी। तो बेसिकली तुम ये कौन जानिबार अछि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम कोन सेठी को प्रकार ताको भाग करा जाय अर्थात प्रेरी साभाना स्टेपेस एवं सेटा जो प्रेरीजटा होची को प्रकार एरिया रे रुहे साभाना को प्रकार एरिया स्टेप्स को प्रकार एरिया को प्रकार एनिमल सेठी रंदी एई प्रकार तुमे ताको आईडिया देई पारो ठीक अछि। तापर देखो डिजर्ट इकोसिस्टम देखो द कॉमन defining feature among desert ecosystem is low precipitation generally less than 25 centimeter or 10 inches per year। Almost 17% of all the land of this planet is occupied by the desert ecosystem अर्थात मरुभूमि पाखापाखि 17% मरुभूमि आम अच्छी पृथ्वी सारा ठीक अच्छे। द fauna and flora in this ecosystem is generally not much developed because of the high temperature। आमे समस्त जानिछु जेहेतु मरुभूमि अछि एई जगह रे मरुभूमि रे अधिक टेम्परेचर थाए सेइति पई एई जगह रे कोन होय बेसी मात्रा रे गछ किंबा ऑर्गेनिज्म देखा जांती फ्लोरा आ फौना रो जो नंबर्स अछि सेटा बहुत कम अछि ठीक अछि। तब देखो हाई टेम्परेचर केवल नुहे आ मद इंटेंस सनलाइट एंड लो अवेलेबल ऑफ वाटर जेहेतु पानी भी कम मात्रा रे अछि टेम्परेचर अधिक अछि एवं बहुत मात्रा से सनलाइट पड़े तेणु एई जगह कोन अछि जीवजंतु कम देखा जांती ठीक अछि काहेकि ना एक रे जदी गछ ही हबो नाही सेठी गछ जदी नथिबो ताले जीवजंतु संख्या ऑटोमेटिक कमी जीवो। द मेन वेजिटेशन ऑफ सच एरिया आर श्रब bush and the few grasses and trees। बेसिकली कंटा जातीय गछ एई प्रकार गछ मध्ये सेठी देखा जाए ठीक अछि। तापर देखो द स्टेम ऑफ द लीव ऑफ दीज plants are also developed in order to conserve as much water as possible। तो बेसिकली जेहेतु पानी सेठी कम थाए आमे जानि मरुभूमि जो गछ रही थांती सेठी जेहेतु पानी बहुत अभाव सेठी स्टेम रे कोन होय ताको से गछर स्टेम रे कोन होय बहुत कम मात्रा रे से माने पानी स्टोर करंती केते दरकार जेतिकी तांकू से प्लांट्स को जेतिकी दरकार सेतिकी पानी को से माने स्टोर करके रखंती। तापर देखो कैमल reptiles and some insect and birds are living creature which are found in such area। तो बेसिकली एठी सेही प्रकार जीवजंतु बसवास करती जो माने कि अल्प पानी रे बहुत दिन बंची पारती एवं जो माने कोन होंती से माने एई प्रकार अधिक हाई टेम्परेचर रे बंची पारबे सेही प्रकार जीव ही सेठारे देखा जांती। तो बेसिकली एटारे किछि मात्रा रे रेप्टाइल्स किछि इंसेक्ट किछिटा मात्रा रे पक्षी एवं
जोटा होचे ओटो बा कैमेल देखा जाए. Not all desert are hot desert ecosystem can तेणु आम ये कौन जाने not all desert are hot. Desert ecosystem can exist from the tropics to the Arctic, but regardless of latitude, desert are often windy. So some desert contain the dunes, sand dunes, while other feature mostly rock. तो बेसिकली किछिटा आमे जो इकोसिस्टम जो डिजर्ट अच्छी से जगार आमे मरुभूमि बा बाली पाइबा आ बेसिकली अलगा जो डिजर्ट अच्छी सेटार मध्य आमे पत्थर खाली पाइबा. ठीक अच्छे. तापर देखिबा आमे तुंद्रा इकोसिस्टम. आज विथ डिजर्ट a harsh environment characteristic ecosystem is the tundra. In the snow cover देखो wind waves swept तापर देखो treeless tundra, the soil may be frozen year around, a condition known as permafrost. तो बेसिकली यही प्रकार जो तुंद्रा अच्छी तुंद्राटा बेसिकली कौ जगह को देखा जाए जो जगार कौन हुए अधिक मात्रा रे बरफ सब बड़े घेरिकी रही थाए माने सेटा होची वर्ष सारा जोटा ठंडा जगह. ठीक है ताको आमे तुंद्रा बोली कहिबा. द माउंटेन इकोसिस्टम इज द मोस्ट scattered and diverse in terms of the habitat that is provide. A large number of animals and plants are found in these areas. Though the condition at a very high altitude can be very demanding, allowing only the survival of the treeless alpine vegetation. Another important feature about this ecosystem is that the animals which live here have thick fur coat for protection against the cold and generally have a long hibernation period in the winter. तो बेसिकली यही जगार कौन एटा जेहेतु बहुत ठंडा जगह तो ये ऑर्गेनिज्म को प्रकार ऑर्गेनिज्म देखा जाए जो माने एते ठंडारे निजको बंचेबा पई तांको बॉडी रे फुर कोट माने कौन गोटे इन्सुलेटर टाइप रो तांकर चारिपटे कभर होगी माने तांको बॉडीटा को एते मोटा चमड़ा बा लोम थाए जहाँकि तांको ये जो ठंडारू रक्षा कर अर्थात इन्सुलेटर टाइप रो काम करे. ठीक अच्छे. तो यही प्रकार ऑर्गेनिज्म माने सेटारे केवल बसवास करती एवं आउ माने आउ को माने जो माने हाइबरनेशन करती एई समय से प्रकार जीव माने एठारे रहंती. ठीक अच्छे. द स्लोप्स एट lower altitude are generally covered with coniferous forest. तब देखो during the brief spring and summer snow melt producing shallow ponds with attract migrating waterfalls. Lichen and small flower may becomes visible during this time of year. The term tundra most commonly denote polar area. तो बेसिकली पोलार एरिया को तुंद्रा बोली कहा जाए बट एट लोअर अल्टीट्यूड तुंद्रा लाइक कम्युनिटी नोन एज आल्पाइन तुंद्रा मे बी फाउंड इन हाई एलिवेशन. तो बेसिकली पोलार रीजन आमे ताको तुंद्रा कहूँ. ठीक अच्छे. किंतु जोटा जदि आमे लोअर अल्टीट्यूड को जीवा ताले तुंद्रा को आमे बेसिकली से कम्युनिटी को आमे आल्पाइन तुंद्रा मध्य कही थाउ. तो बेसिकली देख स्प्रिंग आउ समर कौन होता है ये स्नो गुड़ाक मेल्ट हो जाती एवं जेहेतु स्नो गुड़ा मेल्ट हो गले कौन हम ऑटोमेटिक सेटारे धीरे धीरे किछिटा प्लांट्स हो एमाने कौन होती स्टार्ट करेंगे लाइफटा को स्टार्ट करेंगे प्लांट्स हो बा एनिमल्स हो लाइफ को से स्टार्ट करती. बेसिकली सेठी कौन हम सेठी लाइकेन किंबा छोट छोट फूल गछ मध्य सेठी आसे एवं जदि लाइकेन किंबा छोट छोट फूल गछ आसला माने ऑटोमेटिक सेठी ऑर्गेनिज्म माने ताको जीवन जापन स्टार्ट करेंगे. ठीक अच्छे. तो यहाँ हूँ तुंद्रा. ठीक अच्छे. तापर आमे देखिबा कौन एक्वाटिक इकोसिस्टम देखिबा.
तो बेसिकली देखो an ecosystem which exists in a body of water is known as aquatic ecosystem. The communities of living organisms which are dependent on the each other and the aquatic surrounding of their environment for their survival exist in the aquatic ecosystem. The aquatic ecosystem mainly on two types, ଗୋଟେ ହେଉଛି fresh water, ଗୋଟେ ହେଉଛି marine. ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଏବେ ମେରାଇନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। देखो मेराइन इकोसिस्टम आर बिगेस्ट इकोसिस्टम कहीं कह तो कारण आम जान 70% ऑफ जो वाटर अच्छी आर्थर से कौन पानी रे ही घेरी रही है तेणु आम कहीपर मेराइन इकोसिस्टम हूँ आम बिगेस्ट इकोसिस्टम दे कवर अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑल्सो contain almost around 97% of total water present on earth. तेणु आम ताको बिगेस्ट इकोसिस्टम बोली कहबा। हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट आर जनरली प्रेजेंट इन द वाटर इन द मेराइन इकोसिस्टम एंड to better understand the amount of composition of the different minerals and salt in the water in different marine ecosystem. Marine ecosystem differ from the freshwater ecosystem in that they contain salt water. Basically marine ecosystem माने कौन marine माने कौन जो आम लुणी पानी पाइबा ताको marine ecosystem कहबा किंतु fresh water माने कौन जो आम मधुर जल पाइथिबा ठीक अछि which usually support different type of species that does fresh water. Marine ecosystem are the most abundant type of ecosystem in the world. They encompass not only the ocean floor and surface but also tidal zone, estuaries, salt marshes and saltwater swamp, mangrove and coral reef रे मध्य एई प्रकार सब इकोसिस्टम सब मध्य देखा जाए ठीक अछि। तब देखो फ्रेश वाटर कौन देखो द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आर वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड एंड compared to the marine ecosystem as these cover only 0.8% of the earth surface and only around 0.009% of the total water present of the earth ठीक अच्छे देर आर थ्री बेसिक काइंड ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जोटा अच्छी लेंटिक जोटा आम प्रिवियस तुमको गोटे टेबुलेसन बा चार्ट गोटे देखी लेंटिक लोटिक एवं वेटलैंड द लेंटिक इकोसिस्टम आर स्लो मूविंग और स्टिल वाटर लाइक पॉन्ड्स देखो लेंटिक इकोसिस्टम कौन जोटा हूँ आम पॉन्ड्स को आम आखि आगे रखीदा पॉन्ड हो कि लेक हो जो स्लो मूविंग वाटर सिस्टम थाए है लोटिक इकोसिस्टम कौन जोटा कि फास्ट मूविंग वाटर सिस्टम लाइक रिवर है तापर वेटलैंड कौन दोज इकोसिस्टम वेयर सॉइल रिमेन सैचुरेटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात से ओदालिया जगह सन्तसन्तिया जगह जोटा ठीक अच्छे तो बेसिकली तीन प्रकार लेंटिक अच्छे जोटी कि स्थिर जल थाए बा पानीटा बेसी मूव करे ना जमीक उदाहरण होची आमर पोखरी आउे आम लोटिक कौन लोटिक अच्छे जो जगह जोरे पानीटा बोही जाऊँ जमी रिभर हो बा झरणा हो युड़ाक वेटलैंड हूँ आमर सन्तसन्तिया जगह ठीक अच्छे मेनी डिफरेंट स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल amphibian and around 41% of the world fishes species live in these ecosystem. The faster moving water contain more dissolved oxygen than the slow moving water and hence support greater diversity. तो बेसिकली आमे जानिछु जेतिकी पानीटा जोरे बुहे सेठी ऑक्सीजन सेतिकी डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन क्वांटिटी सेतिकी थाए तेणु आमे कहि परिबा जे फास्टर मूविंग वाटर सिस्टम रे अधिक मात्रा रे डायवर्सिटी देखा जाए ठीक अछि। तापर आमे देखबा पॉन्ड इकोसिस्टम देखो पॉन्ड इकोसिस्टम कौन दीज आर यूजुअली रिलेटिवली स्मॉल एंड content most of the time they include various type of plant amphibian and insect sometime they include fish but as these cannot move around as easily as amphibian and insect
it is less likely and most of the time fish are artificially introduced to this environment by human. तो बेसिकली पॉन्ड इकोसिस्टम रे कौन तुम आम्फिबियान कि प्लांट्स कि इनसेक्ट रही माछ मैंने कौन होती बहुत कम मात्रा से देखा जाती कहीं जेहेतु माछ मैंने अन्य को जगह मुव करें बा अन्य को जगह को सेठ को आसीपारे तेणु माछर मात्रा कम देखा जाए केतेबेले माछ अधिक रुहे जेतेबेले ताको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा जाए बा कृत्रिम उपाय बा मनुष्य माने जेतेबेले माछ को पोखरी रे छाड़ती सेतेबेले माछ देखा जाए ठीक अच्छे एटा होची पॉन्ड इकोसिस्टम तापर रिवर इकोसिस्टम कोन देखो these because rivers always link to the sea they are most likely to contain fish alongside of usual plants amphibians and insects तो बेसिकली आम जानी पोखरी जो आमर जो नदी गुड़ाक अच्छी से नदीर समुद्र सहित जेहेतु लिंक थाए तेणु एटारे वर्ष तमाम एठी माछ देखा जाए एवं प्लांट्स एम्फिबियन इनसेक्ट सब प्रकार जीवजंतु एठारे देखा जाती ठीक अच्छे ताले एटाको आम कहबा प्रचुर मात्रा रे इकोसिस्टम देखा जीवो तापर देखो दिस सॉर्ट ऑफ इकोसिस्टम कैन आल्सो इंक्लूड बर्ड्स बिकॉज बर्ड्स often hunt in and around water for small fish or insect तब देखो आज सॉरी तो देखो आज is clear from the title freshwater ecosystem are those that are contain a freshwater environment these conclude but is not limited to pond river and other waterways that are not the seas है freshwater ecosystem are usually the smallest of the three major classes of ecosystem accounting for just 1.8% of the total earth surface. The ecosystem of freshwater system include relatively small fish, amphibians, insect and various sort and the coarse plants. The absolutely smallest living part of the food web of these sorts of ecosystem is plankton, a small organism that is often eaten by fish and other small creature. तो बेसिकली एठार छोट छोट प्लांटन मध्य देखा जाए जहाँ को कि माछ माने खाई बंचती ठीक अच्छे तो बेसिकली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कौन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो क्लासिफिकेशन हो पॉन्ड हो बा रिवर हो तुम बुझीपार तो ये माछ माने कौन होती बेसिकली छोट छोट जो प्लांटन अच्छे से प्लांटन को छोट माछ खाए और छोट माछ को बड़ माछ खाती एवं से जो मैंने आम माने शिकारी माछ से खाती और शिकारी माछ जो डिकम्पोज हुए ताको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने खाई बंचती तो यही प्रकार पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम अच्छी तो बेसिकली टोटल इकोसिस्टम कैटेगोरीज आम पढ़ले नेक्स्ट क्लास में अधिक पढ़ा आज तो ये थैंक यू।